Let's discuss log function. In this lecture, we'll see what log is, how it works, what is the use of log in physics, these sort of things. First thing, let's make log easy for everyone. कोई नई चीज नहीं है. It's something which you already know. Something like this. 2 to the power 3 is what? 8. Everybody knows that 2 to the power 3 is what? 8. There is nothing new in this. If you are in 11th, you know this thing already. Now let's see how we can write the same thing with the help of log. Log of 8 on base 2 is equal to 3. What did I say? Log of 8 on base 2 is equal to 3. Log of 8 on base 2 is 3. Which means now everyone knows what log is. क्या है? What is log? Log is equal to 3. And what is 3? What is 3? 3 in this case is power. Since 3 is power, we say that log is nothing but power. So when you write log of 8 on base 2 is equal to 3, इसका मतलब क्या हुआ करता है? जिस पर आपने पावर रेज की है, that is base. जो प्रोडक्ट आएगा, that will be here. And the whole thing is equal to what? 3. Let's see another example. 10 to the power 2 is 100. Let's convert this thing in log. Log of 100 on base 10 is equal to 2. Base जिस पर पावर रेज किया, प्रोडक्ट 100, पावर यहां आएगी. Let's take another example. 4 square equals 16. Log किसका log? 16 का. किस बेस पर? 4. क्या मिला अपने को? 2. How do you read it? Log of 16 on base 4 is equal to 2. Let's take another example. Square root of 4 is 2, which means 4 to the power half is equal to 2, which means log किसका? of 2. बेस क्या है? किस चीज पर पावर रेस की हुई है हमने? 4. The whole thing is equal to what? 1 by 2. What is log? Power. तो यहां पर हमेशा क्या आया करेगा? इक्वल साइन के राइट में क्या आया करेगा? पावर. Note down all these examples. Pause the video. अब इसके आगे चलते हैं. हमने यहां देखा, how do you read this whole thing? Log of 8
on base 2 is 3. But now let's see how we solve a given log function. Suppose we have been given log of 8 on base 2 and they ask us what's the value of this. Well, you already know this, लेकिन यहाँ हम इसको रीड करने की जगह अपने दिमाग में फिट करते हैं कि किस तरह से लॉग को आप सॉल्व करेंगे. Log of 8 on base 2. The way you read it is log of 8 on base 2. The way you solve it is, what is that power which should be raised over 2 so that whole thing becomes 8? If I ask you what is that power which you should raise over 2 so that you get 8, you know that power is what? 3. That's how you can find easier values of log by using this concept. Let's take another example. Log 64 base 4. If I ask you what's the value of this thing, तो आपने अपने दिमाग में क्या रखना है? 4. इस पर कितना पावर रेस करें that it becomes what? 64. Now, what is that power which you should raise over 4 so that you get 16? You know that power is what? 3. 4. इस पर कितना पावर रेस करें so that it becomes 64? You will say that power is what? 3. Log of 64 on 4 base is equal to 3. ये तो हुआ रीड करने का तरीका. सॉल्व करने का तरीका, 4 पर कितना पावर रेस करें ये पूरी चीज क्या बन जाए? 64. Let's take another example. Log of 9 base 3 is, एक तरह से आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे लॉग पूछा जा रहा है. लॉग मतलब आपको क्या फाइंड करना है? पावर फाइंड करनी है. किसके ऊपर पावर रेस करनी है? 3. क्या बन जाना चाहिए? 9. What is that power? 2. And therefore this value is coming what? 2. Simple values of log, you can easily find them like this. Let's take another example. Log of 6 base 36. 36 इस पर कितना पावर रेस करें so that it becomes 6? Now suppose you do not know this thing. Then if you do not know this thing, we take this value as what? X. Value of unknown is what? X. Now let's see how we remove log. You can use this trick. You can remember this trick. What is the trick? 36 is the base. Power is x and product is what? 6. Move like this. 36 to the power x gives you what? 6. Now, but you know that square root of 36 gets you what? 6. Square root of 36 means 36 to the power half. Its value is what? 6. So if 36 to the power half is 6 and 36 to the power x is 6, यहाँ से और यहाँ से आपको मालूम पड़ा x की वैल्यू क्या है? Half. And therefore you say that this x is what? 1/2. हालांकि जो हमारा पहला तरीका है वो ज़्यादा इजी है. 36 पर कितना पावर रेस करें so that it becomes 6, and we will say that value is 1/2. Note down this.
Now, let's see some basic things about log. क्या है वो बेसिक चीजें? मैंने आपसे बोला that 1 square, you know that its value is 1. And if I ask you to write down this thing in terms of log, आप ये करेंगे log, what is base जिस पर पावर रेस की हुई है, what is the product, and what do you get? 2. Again, what is 1 cube? 1. Cube of 1, that is also 1. Let's write down this thing in terms of log. Log. किसका log? What is base जिस पर पावर रेस किया हुआ है? And what's the value? 3. Let's take another value. 1 to the power 47 is what? 1. What is the log format? Log 1 base 1, it gives you what? 47. क्या प्रॉब्लम आ रही है अब उसको देखना. कोई हमसे पूछता व्हाट्स वैल्यू ऑफ log 1 ऑन बेस 1. एक आदमी बोलता 2, एक आदमी बोलता 3, एक आदमी बोलता 47. You cannot have these many values of log. You can see there are infinite such values possible. You just need to change the power. And therefore, in maths we say that चाहे कुछ हो जाए base, it cannot be 1. This is the first thing you need to remember. When we talk about log, base is never 1. You can write down this as a statement that in log, base is never taken 1. क्यों नहीं लेते हैं आपको दिख रहा है. अगर बेस 1 है और आपसे किसी ने पूछा what's the value of log 1, then you will get multiple answers. एक क्वेश्चन के इनफाइनाइट आंसर्स. बचने का तरीका हमने पहले से ही डिफाइन कर दिया, चाहे कुछ हो जाए बेस 1 नहीं लेंगे. नोट डाउन दिस. Now, what is 2 to the power 0? You know that. Anything to the power 0 is what? 1. Let's write down log version. Log. किसका log? Product. What is base? जिस पर पावर रेस किया हुआ है. log का मतलब क्या होता है? पावर. कौन है पावर? 0. Again, 3 to the power 0. You know that this is also 1. In fact, anything to the power 0 is what? 1. How do you write log? किसका log? 1. What is base? 3. What is the power? 0. 27 to the power 0. This is also what? 1. What is the log version? Log of 1. What is the base? 27 is what? 0. Which means हमने एक चीज नोटिस कर ली, अलग अलग बेसिस हैं, लेकिन अगर यहां पर 1 है प्रोडक्ट तो हमेशा पावर क्या आएगा? 0. This gives us a property. You can write a property like this, that log of 1 for any base A is what? 0. And remember that A is not 1. ये हमने पहले ही डिफाइन कर दिया. ब्लू में क्या इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है? ब्लू में केवल इतना सा इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है कि किसी नंबर A पर अगर आपने 0 पावर रेज किया तो आपको क्या मिलेगा? 1. Let's remove log.
लॉग रिमूव करने का तरीका क्या बताया? लाइक दिस। ये चीज क्या बनी हुई है? a to the power 0. It gets you what? 1. And as I told you that a should not be 1, that means base should not be 1. तो हम क्या याद रखेंगे? हम सीधा सीधा स्टेटमेंट याद रखेंगे, log of 1 is always 0, whatever be the value of base. And remember, when you define base, that should not be 1. Note down this. Now let's see a few properties of log. Log of A multiplied by B for some base C is log of A for same base C plus log of B for same base C. Product of A and B. How do you open this thing? Log A plus log B. Your base should be same. It's an important property of log. You should remember it. मैं इसका proof दे रहा हूँ. Nobody will ask you that proof, but पता होना चाहिए कि किस तरह से log function काम करता है, and therefore we'll see the proof also. और उस proof से एक फायदा ये होगा कि आप इस चीज को विजुलाइज कर पाएंगे जो भी आपके लिए केवल एक इक्वेशन के फॉर्म में है. Let's say left side is x and the right side is y and z. This thing is x, this thing is y, and this thing is z. We need to prove that x is equal to y plus z. अब हमने क्या क्या चीजें यहां पर अज्यूम की हैं वो देखना. log AB base C, log AB base C. What is the value of that? X. मैंने आपको log रिमूव करने का तरीका क्या बताया? This. You don't need to show this arrow. प्रैक्टिस के साथ आपको मालूम पड़ जाएगा किस पर किस पावर को रेज करना है. कौन है बेस? C. What is the power? X. And what is the product? AB. This thing. Now, this log AC. This is taken y. Log of A on base C. ये हमने क्या लिया हुआ है? Y. Remove log. C to the power y is what? A. C to the power y equals to A. Now, what is log of B on base C? Z. Log of B base C is what? Z. Remove log. How do you remove log? Base, power, product, B. C to the power Z, that gives you what? B. Now, look here. C to the power X, C to the power X is equal to A multiplied by B. But what is A? What is A? C to the power Y. Replace A with C to the power Y. And what is B? B is what? C to the power Z. C to the power Z.
Now you know when we take product like this, you need to add powers. So when you add these powers, you get y plus z. C to the power y multiplied by c to the power z. That means you'll need to add these two powers. Now this is c to the power x and this is c to the power y plus z, which means x is y plus z. यही प्रूव करना था, x equals to y plus z. Nobody will ask you this proof, लेकिन प्रूफ के बाद अब आपको पता है कि log में ये जो इक्वेशन आपने लिखा हुआ है, ये जो रिलेशन आपने लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब होता है. तो उस मतलब को एक लाइन में समझते हैं. हमने यहाँ क्या बोला देखना. जब आप प्रोडक्ट करते हैं तो पावर्स ऐड होती हैं. प्रोडक्ट करते वक्त पावर्स क्या होती हैं? ऐड. ये लिखा हुआ है. प्रोडक्ट करते वक्त पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड. प्रोडक्ट करते वक्त पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड. That's what the whole thing says. Note down this. You can pause it, note down the everything. Now, इसी की सेकंड प्रॉपर्टी को देखते हैं. सेकंड प्रॉपर्टी क्या बनेगी? लॉग, इस बार a इंटू बी हमने बोला इज a अपॉन b. And the property says this thing is log a minus log b. इस स्टेप पर इस चीज को पॉज करना विदाउट लुकिंग एट द सॉल्यूशन, इसी चीज को x, y एंड z की टेक्निक से प्रूव करना. एंड देन लुक एट दिस सॉल्यूशन. और वो सॉल्यूशन भी आपके सामने है छोटे छोटे चेंजेस के साथ. क्या है वो सॉल्यूशन? अपने को प्रूव करना है log a अपॉन b is log a minus log b. Same story. We need to prove that x is equal to y minus z. But what is x? This time around x is a upon b. A upon b. A upon b. Left side, log a upon b is x. Log a upon b is x. Remove log, c to the power x. C to the power x is equal to a upon b. Right side, log a base c, same है. Log b base c, that is also same. You will get the same values. Which means c to the power x is a upon b. Put values of a and b from this side. When you put values of a and b from this side, you get c to the power x is equal to c to the power y upon c to the power z. ये क्या लिखा हुआ है? c to the power y upon c to the power z. क्या होता है ये? आपको पता है, डिवीजन में पावर्स को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं and therefore it becomes y minus z. C to the power x is c to the power y minus z, which gives you x equals to y minus z. यही प्रूव करना था, x equals to y minus z. Now, पूरी कहानी एक लाइन में. डिवीजन में पावर्स सब्ट्रैक्ट होती हैं. डिवीजन करते वक्त पावर्स को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, वही लिखा हुआ है यहां. Note down this. Now let's see another property of log. Log of a to the power n for some base c is n times log a same base c.
ये जो पावर है n, ये एज अ कोएफिशिएंट ट्रांसफर हो जाती है लाइक दिस। इस पावर को आपने एज अ कोएफिशिएंट क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। इस प्रूफ को किस तरह से डेवलप करेंगे वो चीज देखते हैं। हमने फर्स्ट प्रोडक्ट रूल जो डेवलप किया था, दैट वाज log of a into b base c, and that was log a plus log b और सेम बेस c। प्रोडक्ट में पावर्स ऐड होती हैं। नाउ लेट्स लुक एट द लेफ्ट हैंड साइड। Left hand side is log a to the power n base c. What is this? This is log of a multiplied by a multiplied by a. How many times? N times. A to the power n means you are multiplying a with a n times, and therefore this thing from this rule becomes log a plus log a plus log a. How many times? N times. Same base. Base is same, base is same, base is same. A into B into C into D into E into F. This rule says कि अगर आप प्रोडक्ट कर रहे हैं तो सारी पावर्स क्या होंगी? ऐड करते चले जाओ। log A plus log A plus log A plus log A. How many times? N times. What do you get? You get N times same number, log A base C, which is nothing but right hand side. Somebody will ask you this proof, but you should know. तो आपकी जो फिजिक्स समझने की आदत है वो अच्छी बनी रहेगी। फिट क्या करना है दिमाग में? पावर एज अ कोएफिशिएंट ट्रांसफर हो जाती है। इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड उसके पहले वाले दोनों पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। Suppose somebody gave us log of 8 on base 2. Well, you know what the value of this thing is. इस 2 पर कितना पावर रेस करें 8 बन जाए। लेकिन हम इसको दूसरे तरीके से देख रहे हैं। हमने बोला this 8 can be written as 2 multiplied by 2 multiplied by 2 base 2. 2 into 2, 4 into 2, 8. हमारा प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है? log 2 plus log 2 plus log 2, 2 2 2. Now what are these numbers? log 2 base 2. 2 पर कितना पावर रेस करें कि 2 बन जाए? Well, that number is what? 1. It's not a property, लेकिन बड़ा easy सा पार्ट है, याद रखिएगा। A to the power 1 is what? A. log फॉर्मेट क्या होगा? log बेस कौन होता है? यहां आता है। प्रोडक्ट क्या है? A यहां आता है। पावर क्या है? 1 यहां आता है। log of A on base A is what? 1. बाकी चीजें आपको याद रखनी है। बेस कभी भी 1 नहीं होता, वो हम देख चुके हैं पहले। दिमाग में रखने का छोटा सा तरीका, जो यहाँ है वही यहाँ है, क्या होगा? 1। अब इस तरह के तरीके डेवलप नहीं करने, लॉजिक डेवलप करना है।
a पर कितना पावर रेज करें a मिल जाए, दैट पावर इज व्हाट 1. 2 पर कितना पावर रेज करेंगे 2 मिल जाए 1. इस 2 पर कितना पावर रेज करें 2 मिल जाए 1 1, and that gives you what 3. Log 8 base 2 is coming what 3. अब फिर से log 8 base 2 इसको आप किस तरह से डेवलप कर सकते थे वो देखना. log 8 base 2, what is 8? 8 is 2 cube, base is 2. थोड़ी देर पहले हमने क्या सीखा, ये जो पावर है एज अ कोएफिशिएंट ट्रांसफर होगी, इट बिकम्स 3 log 2 2. अभी हमने क्या सीखा, 2 and 2, it becomes 1. This is what 3 into 1, and you get what 3. एक और चीज, log of 8 base 2, क्या लिख सकते हैं आप इसको? आप इसको लिख सकते हैं log of 16 divided by 2 base 2. 16 upon 2 is what 8. डिवीजन में पावर्स को सब्ट्रैक्ट करना है. log 16 माइनस log 2, और दोनों जगह का बेस क्या है हमारा 2. नाउ log 16 बेस 2, सबसे इजी तरीका, 2 पर कितना पावर रेज करें 16 बन जाए, एंड दैट पावर इज व्हाट 4, माइनस 2 पर कितना पावर रेज करें कि 2 बन जाए, दैट इज 1, माइनस 1, यू गेट व्हाट 3. एक ही एग्जाम्पल में हमने तीनों वैल्यूज को, तीनों फॉर्मेट्स को समझ लिया. नोट ऑन दिस.